Hello friends, again we are in operating costing. Just I am question number 11. Question number 11. I am using BS Shah book, so you can find the question from the BSR textbook. Operating costing. It is the question of Navayuga travels. Okay, so I am going through the question. You can find it on page number 193. Okay, Navayuga Travels owns a bus which runs between Surat and Morbi. Okay, सूरत और मोरबी में ये बस चलती है for 20 days in a month. एक महीने में 20 दिन ये काम करती है. One day it goes to Morbi and next day it returns to Surat. Okay, सूरत से मोरबी एक दिन जाती है और दूसरे दिन मोरबी से सूरत रिटर्न होती है. The distance from Surat to Morbi is 450 kilometers. मतलब वन साइड के 450 किलोमीटर्स हैं. फॉर द रेस्ट डेज इन द मंथ इट मेक्स 12 लोकल राउंड ट्रिप्स. ओके, 20 दिन सूरत से मोरबी जाती है, बाकी के दिन वो लोकल सिटी में 12 लोकल ट्रिप करती है पर डे. द डिस्टेंस कवरिंग द लोकल ट्रिप इज 5 किलोमीटर्स. ओके, तो बाकी के दिन ये लोकल में 12 लोकल ट्रिप करती है और वो उसका किलोमीटर से 5. द डिस्टेंस कवर्ड इन द लोकल ट्रिप इज 5 किलोमीटर्स. के किलोमीटर से 5. ऑन ऑनवर्ड ट्रिप द बस इज जनरली ऑक्यूपाइड एट 80% ऑफ इट्स सिटिंग कैपेसिटी, बट ऑन रिटर्न ट्रिप टू सूरत इट इज फुल्ली ऑक्यूपाइड. जाते समय 80% लोडिंग पर जाती है और आते समय 100% वो पैसेंजर फुल करके आती है. नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 पैसेंजर्स. 50 पैसेंजर्स. द पैसेंजर्स अवेलेबल ड्यूरिंग अप्रैल इन लोकल ट्रिप्स वेर एज अंडर. चलो पैसेंजर्स भी आपको दिए हैं कि लोकल ट्रिप में कितने पैसेंजर्स मिले हैं. ओके, तो 1 किलोमीटर में कितने, 2 किलोमीटर वाला कितने, 3, 4 एंड 5 ऐसे पैसेंजर हमें दिए हैं. सो पैसेंजर इंटू किलोमीटर करेंगे तो पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा. The bus is under repair for 5 days in a month. क्योंकि पूरे मंथ में बस 5 days रिपेयरिंग में होती है. तो सबसे पहले डेज हम आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज लोकल में बस कितने दिन चलती है हमें नहीं बताया है. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया था. फर्स्ट पैराग्राफ में फॉर द रेस्ट डे मतलब बाकी के दिन. अभी बाकी के कितने वो हम आइडेंटिफाई करने हैं. इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल. इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल. सो अप्रैल के 30 डेज होते हैं. 30 में से 20 डेज चलते हैं सूरत टू मोरबी. 5 डेज के लिए होती है वो मेंटेनेंस में. तो बाकी बच गए कितने दिन, 5 डेज. ओके, ये जाएगी लोकल ट्रिप. ओके, सो ये हमारा होगा डेज का बाइफर्केशन. 20 डेज सूरत टू मोरबी, 5 डेज मेंटेनेंस के लिए. यहाँ पर बस काम नहीं करती तो बाकी बच गए 5 डेज. तो सबसे पहले किलोमीटर्स भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बस कितने किलोमीटर. सिर्फ किलोमीटर अभी मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. ओके, तो जाने के लिए वन साइड के हमारे 450 किलोमीटर है. सूरत से मोरबी जाने के लिए 450 किलोमीटर और 20 दिन जाते हैं, जिसमें एक दिन जाने के लिए एक दिन आने के लिए. सो आउटवर्ड जर्नी सिर्फ 20 में से 10 ही दिन होगी. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम सूरत टू मोरबी. ओके, सूरत से मोरबी जाने के लिए 10 ही ट्रिप होती है. ओके, तो ये हो गए हमारे 450. वैसे इनवर्ड ये हो गया हमारा मोरबी टू सूरत. अगेन डिस्टेंस सेम ही होगा 450 किलोमीटर और जाने के 10 दिन वैसे आने के 10 दिन. सो टोटल 20 डेज और 20 ट्रिप्स हो गई. ओके, ये भी हो गए 450. फिर हो गया हमारा लोकल. ओके, लोकल हमने कैलकुलेट किया है 5 डेज. ओके, इनटू हर एक ट्रिप के है 5 किलोमीटर्स. ओके, और ये 5 दिन में 12 ट्रिप होती है. 5 दिन में 12 ट्रिप होती है. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 300.
ओके, सो टोटल किलोमीटर्स हो गए 9300, ये हो गए सिर्फ किलोमीटर्स. नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई पैसेंजर किलोमीटर. ओके, सो एक पैसेंजर के पास 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लेना, ये इससे पता चलेगा. ओके, सो पैसेंजर किलोमीटर्स में क्या करना है, हमने किलोमीटर तो आइडेंटिफाई किए ही है, बस इसमें सिर्फ पैसेंजर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो आउटवर्ड अगेन कैलकुलेट करेंगे. आउटवर्ड, ओके, आउटवर्ड में तो हमारा ओके 450 किलोमीटर्स, 450 किलोमीटर्स इनटू 10 डेज और 10 ट्रिप्स, दोनों सेम ही है. इनटू लोडिंग कैपेसिटी हमारी 80%, 80% किसका करना है, 50 पैसेंजर की बस की कैपेसिटी है. 50 इंटू 80% आप करोगे तो हो जाएगा 40 पैसेंजर, मतलब जाते समय 40 ही पैसेंजर है, तो ये हो गए 1,80,000 पैसेंजर किलोमीटर. इनवर्ड मतलब मोरबी से सूरत 450 किलोमीटर्स इंटू 10 डेज इंटू आते समय ये फुल कैपेसिटी पर आती है. ओके, सो 450 इंटू 10 इंटू 50, तो ये होगा हमारे 2,25,000 पैसेंजर किलोमीटर. Okay, so we are calculating passenger kilometers. Previously we had calculated the kilometers, which is 9300, जो हमने calculate कर लिया था. Now we are calculating passenger kilometers. So we are combining kilometers with passengers. So outward और inward ये दोनों हमने calculate कर लिया from सूरत to मोरबी and मोरबी to सूरत. Now local trips को भी हम include करेंगे. Now on second page we are having kilometers with the number of passengers, कि 1 किलोमीटर कितने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करते हैं, 2 किलोमीटर कितने ट्रांसपोर्ट करते हैं. So 1 into 2400 it will 2400. 2 into 2000 it will 4000. 3 into 2200 6600. 4 into 2500 it will 10,000, and 5 into 2400, 5 into 2400, so it will 12,000. Make a total of it, so you will get passenger kilometer 1,80,000 plus 2,25,000 plus 4,000 plus 6,600 plus 10,000 plus 12,000. So it is 4,40,000. Now we'll call it total passenger kilometer. Total passenger kilometer is 4,40,000. Now we'll compute the cost. So necessary calculation has been done. Again, I'm repeating. Days we have bifurcated 30 days of April, out of which 20 days is for Surat to Morbi and Morbi to Surat. 5 days is for maintenance, and the rest days are for local trip, which we had identified. It is 5 days. Kilometer we had calculated is 9,300, and passenger kilometer is 4,40,000. Now, prepare statement. Computation of operating costing.
particular and rupees. The cost of bus and estimated life, which is useful to calculate depreciation. So ये जाएगा depreciation में. Diesel and oil, which is variable. Repairs and maintenance, again variable. Annual expense of recycling tires, again variable. Total fixed cost. So we'll give heading fixed cost. Only one expense is there. Fixed cost, which is 48,400. 48,400. We'll prepare another account. Okay. Monthly expense and per kilometer. Monthly expense and per kilometer. चलो मंथली एक्सपेंस फिक्स कॉस्ट में लिख देंगे 48,400. इसका नहीं करेंगे. Only one expense is there. So 48,400 and divide by number of kilometer, which is 9,300. Previously we had calculated 48,400 divided by 9,300. So it is 5.20. 5.20. Number B, variable expense. Number B, variable expense. First we'll calculate depreciation. The cost is 15 lakh and useful life is given in kilometers. So which is 12 lakh. So 15 lakh divided by 12 lakh. So answer is 1.25 per kilometer into 9,300 करेंगे तो हमें टोटल मंथली एक्सपेंस मिल जाएगा 11,625. Next is diesel and oil. Diesel and oil, which is rupees 3.8 per kilometer. So हम लिखेंगे पर किलोमीटर के कॉलम में 3.8 into किलोमीटर से हमारा 9,300. 35,340. 35,340. Repairing and maintenance. Again, which is 60% of depreciation. Now 60% of इसका करेंगे 3.8 into 60%, or you can calculate 35,000 into 340. 35,340 into 60%. Into 60%. So it is 60% of depreciation. So our depreciation is 11,625 into 60%. So it is 6,975. Again 11,625 into 60%. So ये हो गया 6,975 divided by 9,300. Answer is 0.75. Annual expense of replacing tire and tubes. Tire and tubes. Now here friend, the expense is given annually 39,120 divided by, उसको हम convert करेंगे monthly, so it will 3,260 and divide by 9,300. It is 0.35. 0.35. Okay, so it is the total cost. Total करेंगे 48,400 plus 11,625 plus 35,340 plus 6,975 plus 3,260. Total is 1,05,600
divided by 9300. So per kilometer expense is 11.35. Per kilometer expense it is 11.35. Now we need to calculate it पैसेंजर एज पर पैसेंजर किलोमीटर. सो कैलकुलेशन में आ जाएंगे, हेडिंग देंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर. So our total expense is 1,05,600. Remember friends, 11.35 it is per kilometer expense. 1 किलोमीटर का एक्सपेंस है. Now we need to identify कि एक पैसेंजर के पास 1 किलोमीटर का कितना ले. सो हम पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे. सो ऊपर देखेंगे पैसेंजर किलोमीटर हमने कैलकुलेट किए हैं 4,40,000. पैसेंजर किलोमीटर 4,40,000. सो 1,05,600 डिवाइड बाय 4,40,000. 1,05,600 डिवाइड बाय 4,40,000. So answer is 0.24. It is cost per passenger per kilometer. So अगर आपको एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेके जाना है, so cost is 0.24 पैसा. Now in example, लास्ट में उसने ऐसा बोला, लास्ट पैराग्राफ में, नवयुग ट्रैवल्स वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन टेकिंग्स. टेकिंग मतलब सेलिंग प्राइस. सेलिंग के ऊपर उसको 40% प्रॉफिट चाहिए. तो ये भी हम अज्यूम कर लेंगे 0.24 पैसा. इट इज कॉस्ट नॉट सेलिंग प्राइस. हमें सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग को अज्यूम करना पड़ेगा. सपोज सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस प्रॉफिट. प्रॉफिट वी नीड 40, सो कॉस्ट होगी हमारी 60. नाउ ये 60 की वैल्यू हमारे पास है. ओके, सो कंसीडर करेंगे कि 60 जब कॉस्ट है तब प्रॉफिट हमें चाहिए 40. So when the cost is 0.24, how much profit we are in need? So 0.24 into 40 divided by 60. Answer is 0.16. Okay, so cost ये हमने कैलकुलेट की थी 0.24. प्रॉफिट हमें चाहिए एक पैसेंजर के पास 1 किलोमीटर का 0.16 पैसे. तो सेलिंग प्राइस either takings oblique selling price, it is which is per passenger per kilometer. एक पैसेंजर के पास 1 किलोमीटर का हमें 0.4 पैसा कैलकुलेट कंसीडर करना है. सर्विस टैक्स इज 10% ऑफ नेट टेकिंग्स. ओके, इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगाना है, प्लस सर्विस टैक्स which is 10%. okay, so 0.4 plus 10%. okay, it is 0.04. so answer is 0.44. एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का हमें लेना है 0.44. कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये हमने कैलकुलेट कर ली. जो लास्ट में कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ये जो 0.24 हमने कैलकुलेट किया था, इट इज cost per passenger per kilometer and bus fare to be charged to each passenger going to मोरबी. और मोरबी जाने वाले हर एक पैसेंजर के पास कितना फेयर लेना है. ओके, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना है. तो एकदम सिंपल है. ये क्या है 0.44 पर पैसेंजर पर किलोमीटर सेलिंग प्राइस. ओके, सो एकदम सिंपल है. सूरत टू मोरबी का किलोमीटर उसने बताया 450. सूरत टू मोरबी विच इज 450 किलोमीटर्स, और 1 किलोमीटर का हमें लेना है 0.44. तो 450 इंटू 0.44, आंसर इज 198 रुपीज. ओके, एक पैसेंजर की टिकट जो आप जीएसआरटीसी में या बस में लेते हो
वो ऐसे डिसाइड होती है कि 198 कहां से आया. ओके, सो इट इज द मैटर. थैंक यू.